Hello everyone. I hope we are recording. Let me see. Yes we are. चलो perfectly fine है. पिछले सेशन में पिछले वीडियो में हमने बातें करी थी. अपन ने ये देखा था पिछले वीडियो में कि रेस्ट क्या होता है. ये हमने समझा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा. ये सारी बातें की थी. अगर हम रिकैप कर लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे. हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में अगर कोई भी इंसान अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ पैसेज ऑफ टाइम, अगर पोजीशन 1 है और विथ पैसेज ऑफ टाइम ये इसी पोजीशन पे है, तो वो रेस्ट पे होगा. बट रेस्ट पे होगा किसके रिस्पेक्ट में? रेस्ट पे होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. अब देखो, अब हमने फिर क्या किया था, एक क्वेश्चन लिया था. कौन सा क्वेश्चन? ये वाला. ये क्वेश्चन हमारा क्या था, अगर आप पिछला वीडियो जाओगे देखोगे तो ये ओरिजिन पे राम है और आसिफ जी जो हैं वो 5,3 पे हैं. फिर से इस क्वेश्चन को मैं अगले इसमें लेता हूँ, सेम सवाल लेता हूँ, सिमिलर सवाल लेता हूँ. सेम ना बोल के सिमिलर बोलते हैं. ये 0,0 है. सबसे पहले आई होप आपको पता होगा कि इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, और थोड़ा बेसिक चले जाते हैं. एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. एक्स पे नंबर लाइन है 1 2 3, इधर होगा -1 -2 -3. सिमिलरली 1 2 3, इधर -1 -2 -3. इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं. क्वाड्रेंट मतलब 1/4 है ना. इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे. ठीक है, थोड़ा और हम बेसिक से बात करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x और y की वैल्यू हम लिखते हैं, जब भी लिखेंगे तो x, y लिखेंगे. x भी देखो, x भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं. y भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं. तो x और y दोनों पॉजिटिव होगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, ये x है, ये y है ना. x देखो क्या है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में x, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है ना. थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा. इसमें देखो, इसमें आप अगर देखोगे तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इसमें दोनों चीजें नेगेटिव होंगी. फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो x पॉजिटिव है, हाउएवर y नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव होगा क्योंकि हम रिप्रेजेंट हमेशा क्या करते हैं, x कॉमा y. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. अगर ये क्लियर है तो हम पिछले सेशन में जो हमने क्वेश्चन लिया था उसको लेते हैं. नहीं क्लियर है तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज कीजिए और फिर से वो सुनिए. हमारा जो क्वेश्चन था पिछले सेशन में वो था, राम जी जो हैं वो 0,0 पे खड़े हैं और आसिफ भाई साहब जो हैं वो इनिशियली 5,3 पे खड़े थे. आसिफ जी इनिशियली 5,3 पे खड़े थे. फिर विद पैसेज ऑफ टाइम ही वेंट एंड ही स्टूड टू, आसिफ जी जो है थर्ड 3,5 पे चले गए. तो लेट मी टेल दिस इज एज पोजीशन 1 ऑफ आसिफ, लेट मी टेल दिस इज एज पोजीशन 2 ऑफ आसिफ. हमने क्वेश्चंस डील किया था, इज आसिफ मूविंग? द आंसर वाज यस. इसका आंसर हमने दिया था यस. बट इस मूविंग में एक चीज छुपा हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना. ये पिछले सेशन में हमने बात किया था. इसी चीज को मैंने बोला था कि अगर ओरिजिन को हटा के, क्योंकि राम जी जो हैं वो ओरिजिन पे खड़े हैं, तो मैंने इसी में पूछा था, इज आसिफ मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू राम? सेम क्वेश्चन है, बस ओरिजिन को हटा के राम कर दिया. क्यों किया मैंने? क्योंकि राम जो है वो ओरिजिन पे खड़े हैं. द आंसर विल स्टिल बी यस. अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इज राम मूविंग, तो यू विल से नो ही इज नॉट मूविंग, विच इज करेक्ट. बट यहां पे छुपा हुआ क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट. अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इज राम मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू आसिफ? यहां पे मैंने वीडियो एंड किया था पिछला वाला, और मैंने बोला था कि आप सोचो और कमेंट में इसका आंसर बताओ, है ना.
तो इस आंसर को आज हम डेलिबरेट करेंगे इस पे कि इसका आंसर क्या होगा। आज हमारा पूरा का पूरा डेलिबरेशन इस पे होगा। इसको मैं आंसर करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज फिर से मैं रेस्ट के कॉन्सेप्ट पे ले जाऊंगा। रेस्ट का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो क्या है? हमने बातें की हैं रेस्ट के बारे में कि मान लो ये भाई साहब आसिफ जी with passage of time t equal to 0, 1, 2, 3 and so on, अगर ये आसिफ जी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और लेट्स से राम विथ रिस्पेक्ट टू राम, यहाँ पे राम है, यही है आसिफ का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू राम, यही है, तो आसिफ विल बी कंसीडर्ड, आसिफ will be considered at rest, right? This is what we have dealt. But let me do one thing. Now let me tell you one thing, one example. At t equal to 0 पे this is the situation between both of them, right? ठीक है, राम यहाँ है, आसिफ यहाँ है। t equal to 1 seconds पे, t equal to 1 second पे Asif is here only. Asif is here only. However, Ram changes his position and he comes to at this point. Now tell me one thing. Now tell me very simple thing. Has Asif changed his position? If I ask you this simple question, has Asif changed his position? You will say no sir, he hasn't. But again I'll tell you, with respect to what? With respect to origin. But if I ask you, has Asif changed his position with respect to Ram? है ना, with respect to Ram. Now see, initially the position of Asif with respect to Ram was this much. Now the position of Asif with respect to Ram is this much. Obviously there is longer lines representing the both. So the answer will be yes. Though Asif has not moved, but since Asif has changed his position with respect to Ram, so with respect to Ram, Asif is in, with respect to Ram, Asif is in motion. I hope I am making sense. If not, I'll explain it again in the next slide. Let us see. See what is happening. I'll represent with it. Now I'll give you some data and represent with it some numbers. And I'll try to make it simpler for you. This is obviously minus, minus 2, minus 3. Now see, Asif bhai sahab is at, let me say 3,3. Asif, he is here. Let me represent Asif with some different color. I will represent Asif with this. Asif is at 3,3. Okay, let me write 3,3. Now let me write Ram with some different color. Let me write it with black. Ram is, initial position of Ram is this 0, 0. This is the line representing the position of Asif with respect to Ram, right? Now Ram has moved to another position which is minus 3, 3. I'll represent it with some different color. I'll represent with red. Now Ram has moved to minus 3, minus 3. This is the new position of Ram. Now see, let me erase it and do it in a better way, representing the line. Perfectly fine. This line represents the initial position of Asif with respect to Ram, right? And this line, the bigger line, represents the bigger line from here to here, represents the final position
position of Asif with respect to Ram, isn't it? First one is this length, second one is of this much length. Asif is standing there only, Ram is over here. In the next case, Asif is standing there only and Ram has moved to this point. But you tell me, with respect to Ram, is Asif moving? The answer will be yes. ठीक है? I hope I'm making sense. I have tried to clarify the things. Now let us go back to the previous question which we were asking. Is Ram moving with respect to Asif? Now tell me, initially Asif, the position of Ram with respect to Asif is this much. Now the position of Ram with respect to Asif is this much. Has the position of Ram with respect to Asif changed? Position of Ram with respect to Asif changed or not? Changed or not? You will say yes sir, it has changed. Now let us see one more thing. Same question. I'm marking a point. Let us say I'm marking a point over here which is 1, 0. Okay, and I will erase these questions. And I'll try to write new questions, frame new questions. See, now the question is, has the position, now comment on the position. Let me not write has or something. Comment on position of Ram with respect to 1, 0. Okay, I am writing the answer over here. You just say yes or no. Okay, I hope you are recording perfectly fine. Now see, 1, 0 ये है, राम भाई जी यहाँ पे हैं, इनिशियल पोजीशन ये है, टाइम पास हो रहा है फिर भी इनिशियल पोजीशन यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है. कितना भी टाइम पास हो जाए, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ राम भाई विथ रिस्पेक्ट टू 1, 0. सो the position is same. I will say the position is same. Now I am writing another question. This point is 5, 3, right? The another question is, comment on the position of Ramji. Comment on position of Ram with respect to 5, 3, right? Now see, now you forget everything. You forget this step. You see, 5, 3 is this point. With respect to 5, 3, Ramji is at this position. As time passes, t equal to 0 पे भी Ramji, since Ram is not moving with respect to origin, he will be stationary. And with respect to 5, 3 also he is not moving. With respect to 5, 3 also he is not moving, right? Because at t equal to 0, the same line is representing the position of Ram with respect to 5, 3. At t equal to 1 second, the same line is representing the position of Ram with respect to 5, 3. At t equal to 2 seconds, the same line is representing the position of Ram with respect to 5, 3. So the answer will be position is same. Now you forget these things. Now here it is 3, 5 is this point. Now you comment. Now you comment on position of Ram with respect to 3, 5, right? Now see, with respect to 3, 5, the position of Ram is this at t equal to 0. At t equal to time is equal to 1 second, the position of Ram with respect to 3, 5 is this only. At t equal to 3 seconds, the position of Ram with respect to 3, 5 is this only. So is the position changing? No dear, the position is same.
again, right? But now see the question, the beautiful question. Now I have made one of the points moving. Ram is there only standing here, 0, 0. Asif was initially at 5, 3, and Asif have moved to a new position which is 3, 5. Now the question is being asked. The question which is being asked, the question which we need to deliberate is Ram moving with respect to Asif? Very big question. We have been able to answer this question since last 2 sessions, dear. Today we need to give it a try and answer it. The answer for this, we need to think and answer. Now let us see the position of Ram with respect to Asif when he was at 5, 3. आसिफ जी जब अपनी इनिशियल पोजीशन पे थे तो उसके रिस्पेक्ट में राम भाई जी की पोजीशन क्या थी, ये वाली. नाउ सी द पोजीशन ऑफ राम with respect to Asif when Asif is at his new position. This. इसको आंसर करने से पहले एक और आंसर. Sorry, what is happening today? Comment on position of Ram with respect to Asif. Is Ram stationary with respect to Asif? जब हम ये चीजें कर रहे थे, जब हम बोल रहे थे कि नहीं भाई इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग राम जी की पोजीशन सेम है, इसके करस्पॉन्डिंग भी पोजीशन सेम है, इसके करस्पॉन्डिंग भी पोजीशन सेम है, क्या अब मैं पोजीशन सेम लिख सकता हूं? Can I write the same thing कि the position of Ram is same? अगर कोई ये चीज लिखता है तो वो गलत लिख रहा है, ऐसा नहीं है. The position of Ram has changed. Position of Ram changed. Since there is change of position, since there is change of position with respect to Asif. Therefore, Ram is in motion with respect to Asif. I hope I am making sense. So the answer of this question will be what? Is Ram moving with respect to Asif? I want you people to comment down the answer. Though I have solved it, the answer will either be yes or it will be no. I want people who are seeing our videos to comment the answer. I hope I have made some sense. अगर नहीं समझ में आया तो एक नेक्स्ट वीडियो हम कल परसों में लाएंगे जिसमें हम इसको समराइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना. हम उसको समराइज करेंगे, रेस्ट और मोशन की बातों को हम समराइज करेंगे उस वीडियो में, और कुछ अच्छे से पजल्स भी हम करेंगे. ठीक है. बाय फॉर द डे. टेक केयर, स्टडी वेल, एंजॉय योर स्टडी, है ना. चलो यार, बाय, टेक केयर, टेक रेस्ट.